p.m. and currently I'm just studying maths, just solving the chapter 10 circles, and I'm using this guide, Arihant all-in-one. This book is really all-in-one. Why I prefer this book? Because it contains NCERT solutions as well, like some sample papers, a lot of examples with proper solution. There are some exam practice questions, very short assertion, reason, case studies, everything is present in this book. और अभी तक मेरी प्रिपरेशन काफ़ी स्लो जा रही है, आई नो, बट अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा स्पीड अप किया जाए ताकि हम थोड़ा सा जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करें, एंड देन हमें सैम्पल पेपर से भी गो थ्रू होना एक बार, क्योंकि उससे हमें एक ना वेटेज का पता चल जाता है, एक पैटर्न का पता चल सकता है कि किस तरीके का पेपर आ सकता है हमें. सो लेट्स रिवाइज. सो नाउ इट्स 2 PM एंड अभी तक मेरा हो चुका है 4 चैप्टर डन. सो 4 चैप्टर इज़ डन. 5 की एक एक्सरसाइज हो चुकी है. सर्कल्स भी अभी डन है, ठीक है, और सरफेस एरियाज़ की फर्स्ट डन है, और काफ़ी अभी सिलेबस है, ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 एक्सरसाइजेज जो हैं वो हो चुकी हैं. टोटल 17 है, मीन्स अभी हाफ सिलेबस मेरा भी पड़ा हुआ है. सो नो प्रॉब्लम, लेट्स रिवाइज इट more quickly. Also, I'm just thinking to complete statistics chapter now because उसमें बस मेन मोड और मीडियन है, और वो काफ़ी सिंपल कॉन्सेप्ट है, मुझे आता है, बस थोड़ा सा भी भूल चुका है क्योंकि आई थिंक 1 मंथ हो चुका है मैथ्स पढ़े को. मीन्स रिवीजन इसकी मैंने रिवीजन बहुत कम की है मैथ्स की, बिकॉज आई रियली डोंट लाइक मैथ्स, बट आई डोंट नो वाई. सो अभी मैं स्टैटिस्टिक्स करने का सोच रही हूँ. सो आफ्टर जस्ट हैविंग माय लंच. So currently I'm just having sandwiches. So yes friends, now it's around 6 PM and अभी तक मेरा सिलेबस हो चुका है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज डन, सर्कल्स डन एंड स्टैटिस्टिक्स. बेसिकली 5 एक्सरसाइजेज आर नॉट पेंडिंग, और इसके बाद ये मेरा सिलेबस डन हो जाएगा. एंड सैम्पल पेपर भी मैंने अपना हाफ कंप्लीट कर चुकी हूँ. सो ऑलमोस्ट सिलेबस आई एम एक्सपेक्टिंग कि रात तक हो जाएगा. सो
now it's 7 PM and I'm just having my dinner. So अभी है मेरे पास कड़ी विद दही एंड चपाती. So tomorrow I'm having my पंजाबी एग्जामिनेशन. So उसका सिलेबस है, ये देखो सारा मेरा सिलेबस. एंड अभी तक मैंने कर लिया है दिस चैप्टर. दिस पोइम इज़ डन, दिस इज़ ऑल्सो डन. नेक्स्ट लेटर राइटिंग, पत्र रचना, लेख रचना, and one more, that is answer. 5 chapters are now done. 1 2 3 4 5 6 are pending. And now it's 2:30 PM in the afternoon. So let's begin with our study. So yes guys, now it's around 6 PM and abhi just I'm studying chapter mere vade vadere. Means this chapter is all about our elders. माई लास्ट एग्ज़ाम दैट इज़ ऑफ इंग्लिश. तो बेसिकली पहले हमारा पोस्टपोन हो गया था, तो अभी हमारा कल फाइनल आई थिंक होगा. तो अभी तक मैंने एक चैप्टर रिवाइज कर चुकी हूँ, दैट इज़ द प्रपोजल चैप्टर, दैट वाज अ प्ले. ठीक है, मैंने इसकी ऐसे नोट्स बेसिकली बनाया, रिवीजन नोट्स जस्ट. ठीक है, मेन पॉइंट्स एंड समरी, थीम ऑफ द स्टोरी, थीम ऑफ द प्ले. Just I have just wrote down that particular things, and after that I have also analyzed my sample paper of term 2, and I've just jot down the main answers as well in this, because इसके जो हमें आंसर्स है ना, मार्किंग स्कीम ही जस्ट गिवन है. ठीक है, तो आंसर्स नहीं है. ठीक है, इस तरीके से मैंने इनके सॉल्यूशंस भी निकालने की कोशिश की है. एंड फॉर इंग्लिश आई एम यूजिंग दिस अरिहंत क्वेश्चन बैंक एंड दिस एक्मे बुक. दिस बुक इज़ क्वाइट गुड फॉर योर रिविजन पर्पस, क्योंकि इसमें हमें शॉर्ट फॉर्म में सब कुछ दिया होता है. इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन दिस बुक. एंड उसके बाद आई एम यूजिंग दीज एनसीईआरटी बुक्स. ये तो कॉमन है. ठीक है, ये तो हर एक को यूज़ करनी चाहिए. ठीक है, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए. एंड आफ्टर दैट आई एम हैविंग माई नोट्स नोटबुक. इसमें मैंने इस तरीके से नोट्स बनाए हैं. ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लिखे हैं प्रैक्टिस के लिए.
So this is the all stuff that I'm using for my English preparation. सो इंग्लिश के एग्ज़ाम के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा डर भी लग रहा है, क्योंकि इंग्लिश का एग्ज़ाम जैसे टर्म 1 का आया था काफ़ी कंफ्यूजिंग था। जैसे जो हमारे पास पैसेजेस थे दैट वर क्वाइट कंफ्यूजिंग। सो अभी मुझे इस बार भी ऐसा लग रहा है कि शायद पैसेजेस गड़बड़ ना हो जाए, तो उसकी प्रिपरेशन भी हमें करनी होगी। ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सॉल्व करेंगे पैसेज को तो शायद, है ना, ये मेरा डर कहीं ना कहीं पर कम हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश है, लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो इसमें मार्क्स डिडक्ट हो ही जाते हैं। जितनी मर्ज़ी प्रिपरेशन कर लो तो 1 या 2 मार्क्स तो ऐसे डिडक्ट हो जाते हैं। बाकी अगर हम कम से कम मिस्टेक्स करते हैं, हमारे जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं वो क्वालिटी वाले हैं, अच्छे हैं, क्वांटिटी में भी है, तो मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस बहुत कम हैं। सो वी विल ट्राई कि हमारे मार्क्स अच्छे आएँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिस। So as you all people know that I'm uploading this vlog very late, so I just got my result yesterday and today I'm just editing this video, so I just thought to add my result as well. So as you all can see on screen, in English I got 39, Maths 39, Computer Applications 25, and in Science I got 36, Punjabi 34 and Social Science 37. So I got total 93%.